Hallelujah. Shall we all turn our attention to the scripture portion that is from Gospel according to Mark chapter 10, 46 to 52. Gospel according to Mark chapter 10, 46 to 52. मरकुस की सुसमाचार 10वीं अध्याय उसका 46 से लेकर 52 तक की आयतों को आज हम पढ़ेंगे, उसमें से हम कुछ बातों को सीखेंगे. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Praise God. It's a very familiar passage this morning God has given to us. I don't know how many times we have heard from this word. And I don't know how many times I have preached from this word. No, this is very much familiar. This is very much familiar. But this morning, I believe we are going to learn something new from this particular passage. As God put something in my hearts and mind, I just want to pour out that thoughts which God has given to me to the church to understand very specifically about what this passage is really talking about. Now, this is a passage of a miracle story, right? It's a miracle is taking place, and now Jesus is leaving Jericho, right? Jericho. He's leaving Jericho and he's going to enter into Jerusalem, right? He's entering into the Jerusalem city. Now, before leaving this particular city called Jericho, there is some incidents is happening. We read here in the first verse. Shall we read that once again? The first verse. When they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the road. A blind man named Bartimaeus was sitting by the side of the road. You know, we are very much familiar with Bartimaeus. Okay, the Bartimaeus. No, he has no name actually. Right? Bartimaeus is not a name. Bartimaeus is not a name. Bar-Timaeus. In bracket is written son of Timaeus. Bar in Aramaic means son. Bar in Aramaic means son. In Hebrew, there is Ben means son. By mistake, my parents have given the name Benson. That means son. There is no meaning at all. Right? Now, if you go into the Hebrew context, my name has no meaning. That is son of son. Okay, son of son. One Bartimai in Aramaic means son of Timai. Son of Timai. He has no name. Now, this morning I want to introduce a person from this particular passage, a man with no identity. Praise God. I want to speak about the identity. The first thing that I want to bring before you is about the identity. A man who has no identity, when he comes in contact with the Son of God, how his identity is being regained. Praise God. Hallelujah. Many times we think that I have no identity. No? There are people in and around us who says that I have no identity. I have no father, I have no mother. But when they come in contact with the Son of God, the Messiah, automatically they regain an identity. जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान कहलाने का हक दिया. John chapter 1 verse 12. Praise God. Now whosoever has received Jesus Christ has given the right to be called as the children of God. When one person comes in contact with God, he gets a new identity. You know, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Praise God. When the later part of this miracle story, when Paul is depicting that, when anyone, if he comes in the knowledge of Christ, he becomes a new creation.
Today, this Bartimaeus, when he come in contact with Son of God, he is getting a new identity. Praise the Lord. In Jesus, we have a new identity. We should never forget that. Praise God. Hallelujah. Whenever we are coming in contact with Jesus Christ, we have received a new identity. We cannot say that we don't have any identity. We have an identity of the Son of God. Hallelujah. Praise God. Now, first thing is about the identity. Now, the second thing about this particular person who has no identity. Let us look onto this particular person. Bartimaeus is sitting on the wayside, roadside. And what he has a one blanket. And he has a begging bowl. And he is blind. That is what is all about Bartimaeus has been stated over here. Right? The entire world is where he is sitting. That is his entire world. No, he has a blanket which the government has given to them. All the beggars during that Jesus time in Palestine, government gives them a blanket. Now, as an authorization that you are been authorized by the state, authorized by the government, that government license has been given, you can beg anywhere. But this particular Bartimaeus is sitting just at the border of Jerusalem and Jordan, and he is begging there. Now, that is his world. And in his world, he has been occupied by a blanket, and from this blanket, he used to collect the money also. He may be spreading his blanket so that people may throw some money, throw some coins to them so that he can collect them. That is his everything of entirety. He has only those things in his hand. But he heard someone is coming. Praise God. Let me go fast because the Lord's table is all there. In a very summary ways, I will try to, in a capsule ways, I will give this message to you. Now he heard about that Jesus of Nazareth is on the way of the Jericho road and he is about to leave Jericho. He overheard somewhere who is walking this afternoon or this morning in front of him is Jesus. On that particular day, Jesus is moving with the crowd and he heard it. Now what he did there. Now the second thing, the person who has no identity, he is not remaining as without any identity. Now he is showing his action of faith over there. Right? Well, I read that verse. Continue that. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout. He began to shout. Jesus, Son of David. Jesus, Son of David. Have mercy on me. Have mercy on me. Hallelujah. Now what this person is doing, when he heard that this is Jesus, praise God, he has got a very good Old Testament theology. He know about Old Testament. He know about the promises that has been stated in the Old Testament. That a Messiah is going to take birth in Israel. And when he comes, he will reign over Israel. Praise God. And Messiah, about the Nazareth manifesto, when we read from the book of Isaiah, when we read, when the Messiah will come, the blind will receive the sight. Praise God. Somewhere, I believe that this particular Jew person who has been seated over there, he knows that if Messiah comes, my blindness will go. Praise God. Because the word of God says that the Messiah, when he will come, the blind will get the sight. Hallelujah. Praise God. Somewhere deep inside of his heart, उसके अंदर में एक विचार था कि यीशु है, वो मसीहा है और मसीहा मेरे अंधापन को दूर करेगा, मुझे एक नया ज्योति मिलेगा. Praise God. Hallelujah. And this Jesus has said, I am the light of the world. Praise God. This Jesus has said that I am the resurrection and life. This Jesus has said that I am the way, I am the truth, I am the life. This Jesus has said that I am the door. Praise the Lord. Hallelujah. Now, this particular day, I am is going. Hallelujah. I am is moving on the road. Praise the Lord. And he doesn't want to miss that opportunity that he got it. Hallelujah. Hallelujah. Just analyze our life. How many times we got that opportunity to have a good relationship with God, but many times we missed it. We took a back step. Praise the Lord. Hallelujah. कितने बार अवसर मिला था, कितने बार हम अपॉर्चुनिटी मिलता है एक दिन में ही, हम कल के दिन में कितने बार हम सोचे होंगे कि 5 मिनट में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूं, लेकिन हम पीछे हट गए थे. कोई दूसरा काम, some other work. We have made everything of the God secondary and everything of the world as primary. Praise God. We have to understand the purpose. Hallelujah. What is the purpose that I have come into the knowledge of Christ? Praise the Lord. Hallelujah.
कितने बार जब हमें अवसर मिलता है हम अवसर को उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहां एक बर्तिमाई है, वो अंधा है, वो केवल सुना है, उसे कुछ दिख नहीं रहा है। अंधेरे की उस अवस्था में भी जब ये सुना, उसके हृदय में, उसके कान से जब उसके हृदय में जब कनेक्ट किया, उसके स्पिरिट के साथ जब वो कनेक्ट किया, उसे समझ में आ गया आज जो अवसर मिला है मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? वो चिल्ला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो चिल्ला रहा है। हालेलुया। चिल्ला रहा है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। Jesus, Son of God, have mercy on me. See the theology how he is using. Praise God. Hallelujah. He is bringing Christology also there. Jesus. Hallelujah. Now we many times we don't know the doctrine about God, doctrine about Son of God, doctrine about the Holy Spirit, all the doctrines which we have been given in the Bible. But this man knows the correct doctrines. Hallelujah. He says, Jesus, I know the doctrine very well. You are the Son of God. Praise God. तुम परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। उसके अंधेपन के अवस्थे में उसके अंदर में एक बहुत बड़ा एक विजन था। हालेलुया। वो अपना विजन को नहीं खोया। अंधा है, नेचुरली वो अंधा है, लेकिन वो हृदय के आंखों से उसका दर्शन वो देख रहा था। प्रेज गॉड। हो सकता है 30 साल का होगा, 40 साल का होगा, 40 साल से यहां पर बैठ करके भीख मांग रहा होगा, लेकिन उस 40वें साल में भी उसका दर्शन में किसी भी प्रकार का कमी नहीं आया, उसका वोल्टेज दर्शन का कम नहीं हुआ। हालेलुया। एक एक दिन जाता था, बढ़ते जा रहे थे। एक दिन यीशु मेरे सामने से जाएगा। हालेलुया। और मैं वो अवसर को खोना नहीं चाहता हूं और मैं जरूर चिल्लाऊंगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं? उसे रोक रहे हैं। प्रेज गॉड। बोले नहीं मत चिल्ला, बट नो, he says no, even if you try to stop me this morning, I am not going to remain silent, but I will shout even more louder. No, in the Greek when you read that, the meaning which comes is that in his highest volume of his voice he raised out his voice. Right? That is the meaning comes out when we read from the Greek Bible. The highest volume that he could raise, that particular day, he cried out in that fashion. Praise God. Hallelujah. Now that is what God needs this morning. Praise God. We have to cry out. It is a need that we have to cry out. We have to show the action of faith. Praise God. It starts from crying out. If we are ready to cry out, automatically our body will be in action. Praise the Lord. We will never be arrested there. He was arrested there. He was kept over there. This is your place. You should not leave this place. But when Jesus came, he said that today I am breaking all the binding, all the arrest, all the shackles which the government has binded me, which the world had gifted me. I want to break everything. Hallelujah. When he shouted that, the Son of God stood there. परमेश्वर का पुत्र क्या हुआ? Stopped. He stopped. Hallelujah. Every word that we utter in the name of Jesus, Jesus listens and he stops there. Praise the Lord. Hallelujah. How much may be the busy life he is having, but he will give his ear to all our cry. Let us not forget that. Praise the Lord. Hallelujah. We have to experience that. We have got a lot of testimony. When we go through the struggles time, when we are going to the crisis time, when we cried out, praise God. Remember the last time when you cried, when you were in crisis, when you were in struggle, and how God came down and become Ebenezer for you. Hallelujah. And you said that, yahan tak परमेश्वर ने मुझे संभाला है, testimony. Praise the Lord. Hallelujah. You were about to fall. You were about to die. You were about to finish your life. You were about to quit everything. But you remember that particular day when you cried out, how God came down and delivered you out from that situation. Praise the Lord. Hallelujah. Now, don't ever think that, when I cry out, God is not going to listen to me. Every word that we utter, God is going to listen. Now, Jesus stopped here. And Jesus is telling, call him. यीशु क्या बोल रहा है? उसे बुला के लेके आ. Read that, brother. Jesus rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Yeah. Jesus stopped and said, call him.
So they called to the blind man, cheer up, on your feet. He is calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Praise God. Hallelujah. Now when he heard the calling of Son of God, now you see the rest of the action of faith. Praise God. When he received the call from the Son of God, call him. Praise God. And people are going and calling him. What is doing? All of a sudden, he threw his garment away. The ball which we has having, he threw it away. Praise God. He jumped. Hallelujah. With that extra, I cannot visualize that. उसकी खुशी कितनी बड़ी खुशी होगी. वो किस प्रकार से वो छलांग मारा होगा. Praise God. Because he was eagerly waiting for a call. Praise God. वो बुलाहट को कभी भी वो तिरस्कार करना नहीं चाहता था. Amen. Praise God. एक बुलाहट प्रभु यीशु मसीह से मैं उस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता हूं. Praise God. This morning, praise God. परमेश्वर हमें कितने बार बुलाए हैं. हालेलुया. जब वो बुला रहा है, जब वो हमारे हृदय के अंदर में जब एक एक शब्द डाला था, हम किस प्रकार से उस शब्द के ऊपर में हम रिएक्ट किए हैं. Praise God. There is where the differences comes. Hallelujah. Hallelujah. प्रार्थना का एक बोझ हमें जब देता है, हम कितने बार अपने बिस्तर से उठ करके हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए हैं. Hallelujah. Praise God. मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसा अनुभव है, जब मैं लेटता हूँ परमेश्वर एक बर्डन देता है. Come on, get up and pray. Praise God. When we get something in our hearts, something in our life, something which God puts it into our mind and heart to pray or anything, no, we should not miss that opportunity. That's a call. That is a ringing call. That is a call that now get up, do something for the Lord. Intercede for the Lord. Now this Bartimaeus, when he heard that call of God, come, call him to me. Praise the Lord. And he is showing that action of faith and he's coming, jumping and coming. ये अंधा व्यक्ति जंप करके कैसे आ रहा होगा. Praise the Lord. You can just visualize that. Hallelujah. किस प्रकार से यीशु के पास में वो आया होगा और यीशु उससे पूछता है तू क्या चाहता है. What do you want? Praise God. हम सोचेंगे यीशु को पता नहीं है कि अंधा है. The God who knows everything, he knows that this is a blind man. ये अंधा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है तुम क्या चाहता है. वो बोलता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये अवसर को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ. I want to see. Hallelujah. Hallelujah. I want to see. Praise God. क्यों मालूम है उसका एक्शन ऑफ फेथ में ऑलरेडी हीलिंग हो चुका है. जीसस क्या बोला? योर फेथ हैज ऑलरेडी हील्ड यू. आमेन. जीसस इज नॉट डूइंग एनी प्रेयर देयर. जीसस उसके आंख के ऊपर में हाथ नहीं रख रहा है. यूजुअली जब अंधा व्यक्ति आता था, मड निकालता था, आंख में डालता था, थूक लगाता था, आंख में लगाता है, नहीं तो उसके लिए प्रेयर करता है. लेकिन ये जो इंसिडेंट है यहां पर जीसस कुछ भी नहीं कर रहा है. जीसस क्या बोल रहा है? योर फेथ हैज हील्ड यू. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. तुम्हारे चलने में फेथ दिखता है. प्रेज गॉड. तुम्हारे अप्रोच, जब यीशु मसीह के पास में जब तुम किस प्रकार से अप्रोच से आते हो उसमें विश्वास दिखता है. हालेलुया. यीशु वो देख रहा है. तुम्हारे बोलने से ज्यादा, तुम्हारे गाने से ज्यादा, तुम्हारे विनती करने से ज्यादा तुम किस प्रकार से अप्रोच कर रहे हो सन ऑफ गॉड के पास में, उसके ऊपर में मेरा प्रभु यीशु मसीह कार्य करता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वो क्या कर रहा है? वो चादर उठा के फेंक रहा है. वो अपने मन में बोल रहा है आज मुझे यीशु मिल गया, दोबारा मैं ये चादर नहीं उठाऊंगा. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. मैं बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं जब मैं मेरे यीशु के पीछे जा रहा हूं. मैं जब यीशु के पीछे जा रहा हूं, मैं बीती हुई जितनी भी बातें मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, बिकॉज आई एम ए न्यू क्रिएशन हियर आफ्टर. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वो चद्दर उठा के फेंक रहा है. वो बोल रहे होगे तू चद्दर क्यों उठा के फेंक रहा है, संभाल कर रहा है. वो बोल रहा है नहीं, मैं जब आगे बढ़ रहा हूं मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा. मुझे अब उस चद्दर की जरूरत नहीं है. हो सकता है उसमें पैसे होंगे, सिक्के होंगे, कम से कम 10 रुपया उसके चद्दर के ऊपर में रहेगा, लेकिन दोबारा चाय पिएंगे सोच करके वो 10 रुपया भी लेने के लिए नहीं गया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आगे क्या लिखा है? ही फॉलोड जीसस. आमेन. Praise God. A man who doesn't have the identity. सब उसको बारतिमाई. हालेलुया. एक अच्छा नाम भी नहीं है. उसके माता पिता ने उसे एक अच्छा नाम भी नहीं दिया. पिता का नाम है उससे पहचान वाला एक व्यक्ति.
जो आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन सन ऑफ गॉड के कांटेक्ट में आया, जब उसके स्वर्गीय पिता के कांटेक्ट में आया, प्रेज गॉड, एक नया नाम उसे मिल रहा है। प्रेज गॉड, ही इज ए चाइल्ड ऑफ गॉड नाउ। ही इज नॉट बार्थेमाई हियर आफ्टर। बार्थेमाई उसको ला के बैठाया होगा, बार्थेमाई उसको अंधेपन में रखा होगा। प्रेज गॉड, वो अंधकार में इसको बैठने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो उजाला जब उस अंधकार से जा रहा था, उसे समझ में आया, आंख उसके अंदर की अंदरूनी आंखों से वो देख पाया, एक उजाला मेरे सामने से जा रहा है, वो उजाला मुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हमारे जीवन में भी वो उजाला मिला है। वी हैव रिसीव्ड दैट लाइट, लेट अस नॉट एक्सटिंग्विश दैट। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट Bartimaeus did, he followed Jesus. Where you know? To Jerusalem. Where is he? Jericho. Hallelujah. Yesterday night, God gave me a good revelation. He is seated in the Jericho. Now, Jesus is sharing a parable of Good Samaritan. A man who is coming from Jerusalem, and when he reached to Jericho, now their robbers came and robbed him, beat him, bleeded, he was lying half dead. Praise the Lord. In Jericho. Jericho is a place where you will be ripped, where you will be stolen, where you will be in the half dead condition. That is the state of Jericho. वो उसी इस अंधे व्यक्ति का भी स्टेट वही था, लेकिन वो कहाँ बैठा था? बॉर्डर में बैठा था। Praise the Lord. Hallelujah. He was on the border line, and after crossing that, there is a Jericho. Praise God. He was inside of his heart, he was thinking about Jerusalem. Praise God. One day I will reach into that Jerusalem temple. Hallelujah. I will be with God one day in Jerusalem. Praise God. That's why when he left everything, he never returned back to Jericho, but he is followed Jesus into Jerusalem. Praise the Lord. Hallelujah. इसमें से एक आत्मिक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। दुनिया रूपी जो जेरिको है, इसमें से परमेश्वर इस अंधकार में से हमें छुड़ा करके वापस अंधकार में रहने के लिए नहीं बुलाया है, एक नया जेरूशलेम की ओर। हालेलुया। जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे लिए जो तैयार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का शासन जो नया जेरूशलेम में, नया हेवन, नया अर्थ में जो होने वाला है, उसके ओर मुझे और आपको बुलाया है छुड़ा करके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। हालेलुया। हमें अंधकार में से छुड़ाया है। हालेलुया। हमारे अंधापन को प्रभु यीशु मसीह दूर किया है। हालेलुया। आमेन। Hereafter we are not blinded. We have received the sight. We have received the light. Praise God. Hallelujah. And this particular day, Jesus became a door for him to enter into Jerusalem. Because Jesus said, I am the door. Hallelujah. यीशु ने क्या बोला? मैं हूं द्वार। आमेन। यरूशलेम में एंटर करने के लिए द्वार प्रभु यीशु मसीह है। उस अनंतता में एंटर करने के लिए द्वार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज परमेश्वर इस छोटे से पैसेज में से, इस मिरेकल स्टोरी में से हमें यही समझाना चाहता है। हम प्रभु यीशु मसीह के डोर से हम एंटर किए हैं, वापस जेरिको में जाने के लिए नहीं, लेकिन उसके साथ यात्रा में उस प्रॉमिस लैंड में, नया हेवन में पहुंचने के लिए, नया जेरूशलेम में पहुंचने के लिए। प्रेज गॉड। आज सुबह कितने लोग तैयार है? हालेलुया। यू माइट हैव एक समय था जहां पर आपको आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको एक आइडेंटिटी दिया है। मैं बोल सकता हूँ मेरे जीवन से मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं था। 6 साल की उम्र तक मेरे माता पिता सोचे होंगे कि इसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। 6वीं साल में, प्रेज गॉड, जब मेरे माता पिता परमेश्वर के समीप में मुझे समर्पण किया, उस दिन परमेश्वर ने बोला तू मेरा बेटा है। हालेलुया। उस समय पर जो ज्योति मुझे मिला है, जो मेमोरी पावर मिला है, परमेश्वर मुझे यहाँ तक खड़ा किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइडेंटिटी नहीं था। प्रेज गॉड। मैं क्या होऊंगा? सब लोग सोचे किसी भी तरह 10th पढ़ा करके कोई बिजनेस, कोई ग्रोसरी शॉप खुद निकाल करके इसको बैठा देंगे। प्रेज गॉड। हमारे रिलेटिव्स बोले इसके लिए मैथ्स तो जरूरत है, गिनती तो सीखना जरूरत है। एक मेमोरी लॉस से होकर जाने वाला एक बच्चा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस 6वीं साल में मुझे बुद्धि दिया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर थॉमस शामुएल का। हालेलुया। जिसने मुझे उस 6वीं साल में हाथ में रह करके पूर्ण समय सेवकाई के लिए मुझे अलग किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस दिन मुझे आइडेंटिटी मिला। आमेन। हमारे सबके पास कुछ ना कुछ गवाही है जहां हम बोल सकते हैं कि मेरे पास आज एक आइडेंटिटी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए द्वार बना, मैं एंटर किया हूं। प्रेज गॉड।
हालेलुया, एक्शन ऑफ फेथ ये व्यक्ति दिखाया है। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है हमारे जीवन से एक एक्शन ऑफ फेथ निकाले, विश्वास का कार्य, विश्वास का क्रिया हमारे जीवन से प्रकट होना जरूरी है। Praise God. We have not called just to sit in one place, praise and worship and go back home and rest of the day simply sitting there. No! Every day, every moment, that faith should come out from our life. My God is there. Hallelujah. Now this morning when you are seated, you can express your action of faith. You can say that who God is for you. Whatever may be the crisis, hallelujah. You can speak out in faith. No, my Lord is Jehovah Rapha. He is my healer. That is going to happen in your life. Hallelujah. Praise God. If you need a deliverance, you can say, my God is a deliverer and I need a deliverance, and that will happen to you. Praise God. If there is any family issue, you can pray, God, you are everything to me. You are a God who has instituted the family and work in my family. God is going to do that. Hallelujah. Praise God. For everything, He can do it good. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Last one verse and I will stop over here. Romans chapter 8 verse 24 we will read and we will conclude. 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Yes. Who have been called according to His purpose. Yes. Who has been called according to His purpose. Those people, if they are loving God, for them God works everything for good. Hello. Praise God. Those who have been called according to the purpose of God, we are all called according to the purpose of God. Hallelujah. Many times we are mistaken. We come to God with our purpose. Today's Christianity is moving in this way. आपकी क्या जरूरत है वो सब कुछ वो प्रभु यीशु पूरा करेगा. No. What Romans 8 verses 28 says is that those who have been called according to His purpose. We are called according to God's purpose. And when we are called, we have to love Him. If we love Him, then everything works for good. Amen. Praise God. चाहे वहां पर बीमारी होगा, लेकिन वो बीमारी भलाई के लिए है, वो अच्छाई में बदलेगा. Praise the Lord. Hallelujah. That is what is the promise for the called children of God. Hallelujah. Praise God. उसके पर्पस को मुझे पूरा करना है. उसकी पर्पस के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है. हम नहीं भूले. Praise the Lord. Hallelujah. When we are in the church, we should understand it's not my purpose which has to be fulfilled. Lord, it is your purpose which should be fulfilled. As David sings in Psalms 138, he says, Lord, fulfill your purpose in my life. Lord, fulfill your purpose in my life. Hallelujah. This morning, hallelujah, let us understand the purpose of God. Bartimaeus understood the purpose of God. When he received the call, he understood, I should not come back again and be taking all the things and be sitting again here and begging here. My call has a definite purpose of Son of God. That is to follow Him. And he followed Him. Jesus didn't said that, come follow me. But he understood the purpose. He said that, I will follow Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shall we close our eyes? Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर. हालेलुया. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथों में देते हैं आज सुबह. हालेलुया. खुदाबंद परमेश्वर, बर्तिमाई के लाइफ से हम एक शॉर्ट समरी मैसेज तूने आज हमें दिया, इसलिए धन्यवाद. तेरी पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में था. खुदाबंद परमेश्वर, बर्तिमाई के जीवन में आइडेंटिटी नहीं था, तूने आइडेंटिटी दिया. परमेश्वर, उसको इतना कृपा दिया कि वो अपना फेथ को बहुत एक्टिवेट कर पाए. धन्यवाद परमेश्वर. लॉर्ड, साथ ही साथ में उसका पोजीशन को तूने चेंज किया. वो जेरिको में एक भिखारी था, भीख मांगने वाला था, लेकिन परमेश्वर उसका पोजीशन को चेंज करके तेरा फॉलोवर बनाया. परमेश्वर, वो अभी वो बाय द साइड ऑफ द रोड नहीं है. नाउ ही इज ऑन द वे. हालेलुया. जीसस सेड, आई एम द वे. ही डजंट वांट टू बी बाय द साइड ऑफ द वे. ही सेड दैट इफ जीसस इज ऑन द वे, आई विल आल्सो बी ऑन द वे. हालेलुया. आज हमारा कॉल प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहा है. आर यू इन द वे? हालेलुया. आर यू ऑन द वे? प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में सवाल पूछ रहा है. पवित्र आत्मा हमें दर्शा रहा है, क्या हम रोड साइड में हैं या आज हम परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में ऑन द वे में हम यात्रा कर रहे हैं. हमें ज़रूरत है उसके पर्पस में आने के लिए. प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप हम उसके पर्पस में रहें. धन्यवाद परमेश्वर, वो पर्पस को हमें सिखाया आज सुबह. तेरी कृपा हमारे जीवन में होने पाए. हालेलुया.
तेरी पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में होने पाए। तेरा लक्ष्य हमारे जीवन में तू पूरा कर परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से।